Morning to all of you. Good morning, good morning. Am I audible? Okay, right. So in last class, we were discussing education under British rule, right? We have discussed starting from the company rule. We have discussed the education system till independence. Clear? But here there are two important issues that we must discuss. That is outlook of Gandhi on education and outlook of Tagore on education. This is an important part because very often you might get a chance to write this part in other parts of GS also, especially in essay also. So that's why we should discuss these two topics in detail. Clear? Not only from the history perspective, but this topic is overall very much important. Okay. So we are going to start with the very basic topic, and that is Gandhi's outlook towards education. Gandhi's outlook towards education. Outlook towards education. We all know the challenge of word limit in our answer, right? So the very basic purpose of this discussion is clear. We will try to understand the whole concepts, plus we will try to write the keywords or the key points about the Gandhi's thoughts on education that we can use in our examination. यही करना है. Keywords, key thoughts लिखने हैं जिसको कि हम use कर सकें. We don't need to narrate the entire story, but yes, we need to discuss or understand that story. वो story हमें समझनी है. ठीक है? तो देख, we all know about the life details of Gandhi. Now, when we talk about Gandhi, can we say that Gandhi was an idealist? In your opinion, yes or no? Was Gandhi an idealist? How? Which person is called idealist? आदर्शवादी किसको कहते हैं? Define. ये discussion based class है, आपको आंसर देना होगा और it's not like regular class. आराम से इसको पढ़ेंगे because this topic is very much important. Which person is called idealist? Idealist कौन कहलाता है? Which person is called idealist? Idealist किसको कहते हैं? What is your opinion about this concept? Who is yes? Akash, who is idealist? Exactly. Any other person? Yes, Ashwini. Who is idealist? Are you idealist? How many of you are idealists? Idealists simply mean what? Okay, what you preach, you must practice. This is idealist. घर के बच्चों को कहते हो अरे और मोबाइल फोन ज्यादा मत इस्तेमाल करो और खुद लेके बैठे रहते हो. Okay, it means you are not idealist. ठीक है. मम्मी कहती है बेटा मोबाइल फोन नहीं यूज करना है, पता चला मम्मी सुबह से शाम तक मोबाइल लेके बैठी हुई. अभी सुबह सुबह किसी ने जोक फॉरवर्ड किया कि पहले की मम्मियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे, और अभी की मम्मी लोग ज्यादा पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे रील बना रहे हैं. Right? This was a joke. But idealist is the person, right, who believes, okay, or what he preach, he just implements those things in practical sense in his life. Clear? अपनी लाइफ में वो जैसे कुछ आइडियल्स होंगे जैसा आकाश ने कहा, there might be some ideals. For example, you may notice that in some person, you may notice that simplicity becomes the identity of any person. होता है कि नहीं? The person, okay, is having enormous wealth, but simplicity becomes the identity. मुकेश अंबानी को देख, ठीक है? Simplicity becomes the identity. In the same way, truthfulness, this also becomes the identity of any person. ठीक है, आपको लगेगा कि कोई आदमी ऐसा मिलेगा जिसके बारे में कह सकते हो आप कि यार आदमी चाहे जैसा भी हो लेकिन देयर इज अ सेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस इन दैट पर्सन. ये इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. अगर ये सच बोल रहा है तो हर कीमत पे क्या करेगा? सच बोलेगा. इन द सेम वे गांधी की पर्सनालिटी में व्हाट वी से दैट दिस आइडिया नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस दिस इज आल्सो इज अ काइंड ऑफ
ideal. And what about Gandhi? Okay, Gandhi follows these ideals in his life. He teach these ideals to the others. Got it? So this is the very meaning of the idealist, that okay, which the ideas, or you can say that the principles which are in your mind, you are also doing what? You are also practically, right, following those ideals in your life. There is no any difference between what you say, and there is no any difference between what you preach. Okay, this means what? Perceiving reality. ठीक है, आप दो चेहरे लेके नहीं चलते, right? ठीक है, this is the most important point. This is called idealist. So Gandhi was an idealist. The second important, okay, quality of Gandhi was also a pragmatist. Gandhi was also a pragmatist. Now I'm asking a question, that who is pragmatist? How many of you are pragmatist? कितने लोगों को pragmatist बताओ? Pragmatism is what? If you believe that, exactly, if it means that if you solve any problem in a realistic manner, that is what? Pragmatism. And this can be applied to many multiple spheres in life. For example, pragmatism ये भी हो सकता है. For example, we are learning this topic, Gandhi's outlook on education. And instead of doing rote learning, we are promoting what? Discourse, discussions, and are trying to learn the things. This is also a kind of pragmatism. Got it? If you want to learn something, and if you want to learn something from activities which you are doing, that is also a kind of pragmatism. Okay, and here we are talking about knowledge. So if you apply the same concept on knowledge, what is the meaning of pragmatism? That whatever we are learning, we should learn through experiments, we should learn through discourse, we should learn through discussions. Okay, and in this way we can learn better. So here Gandhi is a pragmatism also, pragmatist also, because he believes in solving the problems or challenges in his life, solving the problems or challenges in his life in a realistic practical ways. Okay, but many critics will say that no, he is more idealist, less pragmatist. But इस debate पे हमें नहीं जाना है. Okay, here we can write like this. Clear? Now, he was an idealist, he was a pragmatist. So his outlook on education were guided by these principles, idealism and pragmatism. ठीक है ना? So Gandhi's outlook of education were guided by his idealistic thought, his pragmatism. Now the second important thing is that when we talk about the outlook of education that was promoted by Gandhi, so Gandhi says that okay, by education, Gandhi said that I mean all around development of personality. Keep writing these points. By education, Gandhi meant what? All around development of personality. Okay, education का मतलब ये है. Okay, it means okay, drawing out the best, okay, in the individual. ठीक है, हमारी personality का जो the best हो सकता है, the best version हो सकता है, right? You will have to explore that. This is the purpose of education. बाकी हम सब लोग raw है, but क्या होता है, education क्या करता है, हमें refine करता है, एक नया shape देता है. The man becomes the new man by this education. Got it? This is the very basic purpose. Here man एक metaphor है. Okay, man becomes what? New man. Man becomes new man. How he becomes new man? By education. Because education helps in what? All around development of personality. The best in your personality can be extracted with the help of this education. Is this idea very similar to the concept of Renaissance man? Yes or no? कुछ आ रहा है, connect हो रहा है? This concept is very similar. New man, this concept is very similar to the concept of Renaissance man. Okay, this concept is very similar to the concept of Renaissance man. It means all around development of personality means what? All around development, it means education includes development of body also and development of mind also. Okay, development of body and development of mind. Do you remember the teachings of Swami Vivekananda? At one point of time, you will find that the teachings are very similar.
विवेकानंद ने क्या कहा, राइट, कि एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, गॉट इट, या ईस्ट प्लस वेस्ट की जब वो बात करते हैं, व्हाट डज ही मीन, द सेम थिंग, क्लियर, आवर बॉडी हैज सम रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो इन दिस मेटेरियलिस्टिक रेस ऑफ लाइफ, जो आप मेटेरियलिज्म में बहुत ज्यादा मेटेरियलिज्म की तरफ चले जाओगे, सो दैट इज नॉट गुड, and there are spiritual needs also, so there should be a proper balance between these things, got it. Now the same thing, that we need an all around development of body and mind, Gandhi explains with the concept of 3H and 3R. What is the concept of 3H and 3R? How this all around development of personality can be achieved here. So Gandhi gives the concept of 3H and 3R. Are you making the sketches in your notes? Because in this way you will be able to write excellent answer in your mains exam. ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी तो हम लिख नहीं सकते, but we can write the core of the issue. 3H. What is the meaning of 3H? 3H means head, heart and head. Right. 3H here means, first H means, right, hand, heart and head. One is what? Hand. The second H is what? Heart. And the third H is what? Head. Where he is indicating, गांधी कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, हैंड मीन्स व्हाट, ओके, वोकेशनल स्टडीज, क्लियर, एजुकेशन बाय लर्निंग, गॉट इट, दिस इज द व्हाट, हैंड, इट मीन्स एजुकेशन विच मेक्स अस सेल्फ रिलायंट, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, you should not worry about from where I could find the job, there is no any job for me in the market, ऐसी बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, हैंड मीन्स वोकेशनल स्टडीज, craft learning, right, some technical education, if you will get this practice, for example, अगर मान लो मैंने फिलोसफी पढ़ ली, ठीक है, सुबह से शाम तक मैं शंकराचार्य रामानुजाचार्य पे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जॉब मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मेरी बात समझ गए ना। तो along with philosophy, if I am a cyber expert, तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, मेरी बात समझ गया ना। along with the philosophy, if I am expert in accountancy, इसका मतलब क्या है कि मुझे जॉब के लिए नहीं सोचना है। इफ आई एम अ सिंगर, ठीक है, बट मेरे पास कोई दूसरी स्किल नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको पता है, बड़ा स्ट्रगल है। इफ यू आर अ सिंगर एंड एट द सेम टाइम, ओके, यू आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन सम इंजीनियरिंग स्किल्स फॉर द मैकेनिकल स्पेस, तो आप अपने हॉबी को भी क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। ध्यान से समझना इस बात, गांधी की बातें बहुत ही रियलिस्टिक है यहाँ पे। दैट हैंड मीन्स व्हाट, वोकेशनल स्टडीज, टेक्निकल एजुकेशन, क्राफ्ट लर्निंग, क्राफ्ट लर्निंग, ठीक है। इंडिया की कंडीशन को देखते हुए, इंडिया में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर टॉकिंग ऑफ विच फेज, ओके, इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर टू थिंग्स। ब्रिटिश ने पहले से ही क्या कर दिया है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो इन दिस सिचुएशन विच काइंड ऑफ एजुकेशन डू वी नीड, द एजुकेशन विच कुड मेक द नेशन फॉरवर्ड, और उसके लिए क्या करना होगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ एजुकेशन इज व्हाट, hurt. Hurt means what? Is spiritual upliftment. That is the meaning of hurt. Hurt का मतलब क्या होता है? Spiritual upliftment. Spiritual upliftment. This is also very much needed. This is also one basic purpose of education, that we could judge that what is right, what is wrong. Our actions should be guided by, okay, morality. Okay, and this is what, hurt. जब हमें ethical considerations होंगे, we should be able to understand that what is right, what is wrong, okay, that is what, morality. Morality तो यही है, ठीक है। We can say that we are talking about morality here, okay. There is another scholar, Martin Luther King, so I am going to quote the statement of that person. He says that in today's world what we see, that there are guided missiles but misguided men. What does it mean? गांधी भी तो यही कहना चाह रहा है, guided missiles will come after our scientific knowledge, when we are intellectual, जब हमने बहुत सारी एजुकेशन पाई है, तो गाइडेड मिसाइल्स, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, बट मिसगाइडेड मैन, व्हाट डज इट मीन, दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज लैकिंग व्हाट, दिस एलिमेंट। थर्ड, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई मिसगाइडेड मैन। तो आप बताओ, अगर एजुकेशन सिस्टम में इफ ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स विल बी अ पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम, okay, so don't you think that it will be very much helpful for the growth and progress of our nation also?
morality, standard, maintaining discipline in the society, and promoting ethical considerations among the minds of the people is also one of the most important things. Clear? So the second focus is head, herd. It means what? He is talking about a particular domain. That is what? Spiritual domain. And what is head? Head means what? Cognitive domain, cognitive skills. Clear? So he's also talking about this cognitive domain or the skill. Cognitive domain or the skill. For example, okay, reasoning, logical reasoning. This is a part of your cognitive domain. Got it? Logical reasoning, the practical sense. Okay, that is a part of your cognitive domain. Okay? Many a times we take decisions in our life, and those decisions are guided by our practical sense. Okay, those decisions are guided by this cognitive domain. So Gandhi says that in education system, if we want to promote all around development of the personality of individuals, so we must focus on 3H. Clear हो गया? I will further explain. आगे भी बताऊंगा इसको in detail. What is the second term here? 3R. And what is the 3R? Write three words here and you can easily relate this 3R. Okay. Read, write, and arithmetic skills. One is read, the second is write, and the third is arithmetic skills. Read, write, and arithmetic skills. Now I am highlighting R here, R here, R here. This is what? 3R. Read, write, and arithmetic skills. Got it? Read, write, and arithmetic skills. Is it needed or not? Ready, write, okay, and arithmetic skills. अब देखो क्या है? When we are getting education in school, we are basically learning how to read, how to write. We are learning mathematics. Then we get some sense of arithmetic skills. कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है तो मैंने सोचा मोमोज ही बेच लूँ दुकान लगा के. ठीक है, तुम पैसे वैसे गिनना आना चाहिए ना. या फिर मैं मान लो ठेले लेके निकल जाऊँ, आलू ले लो, प्याज ले लो, तो मुझे कुछ आना चाहिए. आई मस्ट नो सम मैथमेटिक्स स्किल्स, तभी मेरा जीवन चल पाएगा. नहीं तो आप जैसे कस्टमर मिल जाएंगे और फिर कहेंगे सर हिसाब गड़बड़ कर देंगे मेरा. सो गांधी सेज दैट दिस इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड. ये सबको आना चाहिए, अर्थमेटिक स्किल्स मिलना चाहिए. गॉट इट? Read, write, and arithmetic skills. This is needed. But do you think that this will make us perfect? Only 3R? No. Read, write, and arithmetic skills. इससे कुछ नहीं होगा. Gandhi says that ये तो literacy है. Okay. The education which you are getting in schools and colleges, this does not make you educated. This make you literate. We all are literate, but we are educated or not, it is yet to be tested. एजुकेटेड है कि नहीं ये बहुत बड़ी कहानी. गांधी ने कहा स्कूल कॉलेज से जो सीख के आ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिटरेसी. गांधी सेज दैट सपोज देयर इज अ पॉटर इन योर विलेज. आपके गांव में कोई कुम्हार है. ओके. एंड ही नेवर वेंट टू स्कूल, ही नेवर वेंट टू कॉलेज, बट ही अंडरस्टैंड हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल. गॉट इट? ही इज टेकिंग केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन. He is earning his livelihood by honest means. Okay, he is a responsible member of the community or the village. He practices ethics and morality in his life. तो knowledgeable कौन हुआ? ठीक है. और दूसरी तरफ जैसे बर्थडे का नया कॉन्सेप्ट आ गया, टुडे वी आर इन अ न्यू वर्ल्ड. ठीक है. इन टुडे आल्सो इन सम फैमिलीज on the very special day of birthday there was a tradition in Indian culture कि सुबह सुबह लोग जग जाते थे. They went to temples, mosques, they pray God. आजकल तो रात को 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट होता है, अगले दिन 2 बजे जगते हैं वो. मंदिर जाना तो भूल जाओ. ठीक है, मस्जिद जाना भूल जाओ. ठीक है, पार्टी होती है. तो देखो क्या हो रहा है. ठीक है, व्हाट इज बीइंग प्रोमोटेड? एथिक्स एंड मोरालिटी. देखो पार्टी का एथिक्स और मोरालिटी से कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग. ओके, बट गांधी सेज दैट आवर बिहेवियर मस्ट बी रिफाइंड बिहेवियर. अगर आपने लगता है कि हमने केवल डिग्री ले ली है और हम एजुकेटेड है, सो दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन. दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज व्हाट? लिटरेसी. It means until and unless we are successful in promoting a higher order of the self, we are not educated. Self means individual. जब तक हम इस इंडिविजुअल के हायर ऑर्डर को प्रमोट ना करें, जब तक हम एक इंडिविजुअल की बेस्ट पर्सनालिटी के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं इनको एक्सप्लोर ना करें, जब तक कि एक मैन, अ मैन
does not become a new man, we are not educated. Simply, this is the concept. Okay, so this is the basic parameter of education, right? That we must be able to explore personality. Okay, this is one point. Now, the another focus here in Gandhi's outlook is, right, next point. Okay, I am discussing the key concepts only, so that we could be able to write the answer part. Okay, bread and butter aim of education. Gandhi also talks about this. Bread and butter aim of education. Bread and butter aim of education. Gandhi talks about this pattern of education. Bread and butter aim of education. Clear? This idea is guided by utilitarianism. This idea is guided by utilitarianism. I have already discussed the meaning of utilitarianism. पहले बता चुका हूँ. Okay. And what is the meaning of bread and butter? For example, okay, exactly. It means that it has multiple dimensions. First, okay, earning while learning. इसमें कोई बुराई नहीं. This is what bread and butter aim of education. Earning while learning. You are getting education and you have some skills. You can use that skill, utilize that skill, okay, and you can earn some money. Okay, so this is a matter of great pride. ये गर्व की बात. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पढ़ लिया तो हम दूसरा काम कैसे कर सकते हैं. दोनों को मिक्स नहीं करना है. अर्निंग वाइल लर्निंग, it means we are getting education, we have some practical skills, we can use that skill, we can earn money. That is one of the most important things. Clear? And the second important point is that, okay, when we are getting education, okay, so this vocational education should be a part of this education. Vocational education, कोई ना कोई practical skill हमें सिखाई जानी चाहिए, right? Manual skills, handicraft, industrial training, कुछ ना कुछ होना चाहिए. Manual skills, handicraft, industrial training, manual skills, handicraft, industrial training, right? Manual skills, handicraft, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये हिस्सा होना चाहिए हमारी एजुकेशन सिस्टम का. क्लियर? तो देखो क्या होगा. इफ यू गेट दीज स्किल्स, दिस विल मेक यू सेल्फ रिलायंट. दिस विल मेक यू सेल्फ रिलायंट. If you get these skills, this will ultimately make you self-reliant. So once you complete education, there will be no any fear of not getting the job. Got it? This is one of the most important things, that insecurity will be faded away. So once you complete your education, there will be no any fear. Okay, there will be no any fear or insecurity about unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कोई फियर नहीं होगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगा. ओके, एंड यू विल बी एबल टू, ओके, सपोर्ट योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू सपोर्ट योर फैमिली. क्लियर? एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, दिस ऑल विल बी प्रोमोटेड. गॉट इट? अब देखो सोसाइटी में क्राइम कैसे होता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज कैसे होती है. द यूथ गेट एजुकेशन, okay, youth will not get any job, and there are immense possibilities and energy in the youth. So that energy will be diverted. मेरी बात समझ गए ना? That energy will be diverted. तो वो डाइवर्जन अपने आप क्या हो जाएगा? That will stop. That diversion will ultimately stop. And here Gandhi support four Varna system. This is also very interesting. Gandhi supports four Varna system in its original form, right? This can be a prelims question also. Supports four Varna system in its original form. In its original form. Gandhi supports four Varna system in its original form. Now I'm asking, what is the original form of four Varna system? Profession based. It was not birth based. It was what? Profession based. It was profession based. Profession based. It means that any individual can teach. So those who are, okay, related to these activities, teaching and learnings, are the Brahmins. Okay, Kshatriya कौन हो गया? Soldiers. Vaishya, businessman, and Shudras. Clear? And Gandhi says that there are so many traditional crafts in our country.
and you will find that the castes are also based on these traditional crafts. इससे बेहतरीन एग्जाम्पल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कि in our caste system we find that the distribution of caste is based on these traditional crafts. Distribution of caste, traditional craft. For example, we say सुनार, goldsmith. इसका मतलब नाम सुनते ही समझ में आ गया, ठीक है। अगर किसी की जाति सुनार है, ये कहते ही आपको पता लग गया कि इसकी फैमिली के लोग क्या करते हैं। ओके, मेटल क्राफ्ट, दैट इज द गोल्ड क्राफ्ट, इससे जुड़े हुए। ब्लैक स्मिथ, लोहार, ठीक है। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जानवर, बाबू लोहार। लोहार मीन्स व्हाट? ओके, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ठीक है ना। इसी तरह से अगर किसी ने कहा बढ़ई, वुड क्राफ्ट में, वुड क्राफ्ट, गॉट इट। कुम्हार, पॉटरी, पॉटर. So Gandhi says that these professions here, castes are based on the profession. And today, this is our ignorance that we don't give equal value to all professions. हम सारे professions को equal value नहीं देते. Gandhi says that the work of a barber and the work of a lawyer, the value of both the works are the same. दोनों में कोई difference नहीं. मेरी बात समझ गया ना? I am teaching and someone else is editing my videos and posting it on YouTube. So the value of the work of that person and the value of my work is the same. There is no any difference. And once you believe that, once you start believing that value of work of each and every individual is same, so what will be promoted? हर आदमी कुछ ना कुछ काम करने लगेगा. सबसे बड़ी चीज है सोशल स्टिग्मा. लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं कोई भी काम करने से, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ। मेरी बात समझिए, बदनामी हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी वर्क इज द सेम. ओके, एंड दिस वी नीड टू रियलाइज. एंड गांधी सेज दैट, ओके, गांधी सपोर्ट्स दिस फोर वर्नर सिस्टम फॉर द सेम पर्पस. Okay, that this was a profession based system. And suppose here in this profession based system you will find that the families from generations are just related to the same profession. For example, if there is a goldsmith, so you will find that from generations in that family, the people are doing what? Goldsmith work. So now just imagine they are now excellent, okay, goldsmiths, because they are in this profession from the generations. Got it? So the training of 1 year or 2 year will not beat this ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन. ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन तो उनकी जो एक्सीलेंसी ऑफ क्राफ्ट है उसको आप कभी बीट नहीं कर सकते. और अगर इस बात को हमने पहचान लिया दैट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन आर फॉलोइंग दिस क्राफ्ट फ्रॉम जनरेशंस एंड दे आर एक्सीलेंट क्राफ्टमैन, क्लियर, एंड इफ वी हैव प्रोमोटेड दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू आवर इकोनॉमी. इससे हमारी इकोनॉमी को क्या होगा? फायदा मिलेगा. ओके, नाउ जस्ट इमेजिन द केस ऑफ अ डिलीवरी बॉय, जोमेटो डिलीवरी बॉय, ठीक है. आपने क्या किया? आपके घर के लोग गोल्ड स्मिथ इन द विलेजेस, ओके, और यू कैन से दैट द ब्लैक स्मिथ, योर फादर इज अ ब्लैक स्मिथ और योर फादर इज अ पॉटर, बट यू केम टू बॉम्बे, यू केम टू दिल्ली, दैट आई डोंट वांट टू, ओके, फॉलो द सेम प्रोफेशन. मैं उस प्रोफेशन को फॉलो नहीं करना चाहता. आप चले आए दिल्ली, दिल्ली में आके क्या बन गए? जोमेटो डिलीवरी बॉय. विच स्किल आर यू एक्वायरिंग? कौन सी स्किल सीख रहे हो आप? बताओ. जिस दिन फायर कर देगा जोमेटो वाला, उस दिन दूसरी जॉब कैसे मिलेगी आपको सोचना पड़ेगा. हो सकता है उसके बाद आप कुछ और काम कर रहे हो, आप कोई स्किल नहीं सीख रहे हो. मेरी बात समझो, आपने क्या किया? अपनी एक स्किल, ट्रेडिशनल स्किल को छोड़ के आपने एक ऐसी जॉब ऑप्ट करी जहां पे कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है. गांधी कहते थे इससे क्या होगा? इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है. यूथ के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी अबाउट देयर फ्यूचर. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर? सो इफ वी विल प्रमोट दिस आइडिया, अर्निंग while learning, if you will promote manual skills, handicraft, industrial training, so in this case what will be promoted? Earning and self reliance among the youth will be promoted. The concept is very simple. Earning and self reliance among youth will be promoted, and that insecurity about the future, कि future में क्या होगा, this will come down. Clear? So this is also one basic purpose of our education. So this is purpose number 1. That what should be the purpose of education? Bread and butter aim. What should be the aim or purpose of education?
So point one is what? Bread and butter aim, right? Second point. What is the second aim of the education? Aim or purpose number two. So that is cultural, cultural purpose, cultural purpose. That is the second purpose, cultural purpose. Now what is this cultural purpose of education? कुछ guess करो, बताओ क्या हो सकता है cultural purpose? Yes. चलो ठीक है, कल्चरल में डाल सकते हैं. एनी अदर पॉइंट? गुड. देन गुड. देखो, ऑल ऑल द पॉइंट्स आर गुड. अब इसको बेसिक चीजों से रिलेट करो. कल्चर. व्हाट इज द कल्चर? द वे वी स्पीक, द वे वी आर ड्रेस्ड, ओके, द वे वी वॉक. दिस इज आवर culture. Our personal behavior is the manifestation of our culture. Your conduct is the manifestation of our culture. And what should be the purpose of education? Clear? What should be the purpose of education? This should improve your way of life. Purpose of education यही है कि purpose of education is what? Improving your way of life. Improving your way of life. And this way of life is what? Culture. Improving your way of life. It means your conduct, your personal behavior, your conduct, your personal behavior. Got it? How to communicate, how you are communicating, how you are walking, your dress, okay, conduct, personal behavior, how you communicate, how you are dressed. Clear? All this is what? Manifestation of our culture. Got it? आप पता चले राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकले और जितने स्टेशन पे पहुंच रहे हो, एक बार मेट्रो से बाहर आ रहे हो, कहीं कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो, फिर अंदर घुस जा रहे हो. ठीक है? तो द अदर पीपल विच विल सी यू, व्हाट दे विल से, क्या कहेंगे? कहेंगे बहुत आवारा है यार, बहुत उदंड है, बहुत अनकल्चर्ड पर्सन है. द पीपल विल से ना that how you are behaving, how you are responding, how you are dressing, that is one of the most important aspect of the culture. So the education makes the man new man. How? Education makes the man new man. New man कैसे बनाता है? By improving the way of life, the conduct, the way you speak, you become new man. अच्छा, cultural aspect में there is another dimension that is added. Okay, if you are educated, you are familiar with the glorious cultural history of India. If you are educated, you are familiar with the history of India. If you are educated, you are familiar with the independence movement of India. Okay, so you will start realizing the importance and value of Indian culture. And when you will start realizing the importance and value of Indian culture, you will start behaving in that particular manner. और इंडियन कल्चर कैसी है? हार्मोनियस, कल्चर ऑफ टॉलरेंस. गॉट इट? तो जब आप अपनी हिस्ट्री को समझते हो, कल्चर को समझते हो, तो आप रेडिकल हो ही नहीं सकते, कट्टर हो ही नहीं सकते. आपके अंदर रिलीजियस एनमिटी आ ही नहीं सकती, धार्मिक शत्रुता किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं आ सकती. ठीक है? आपके अंदर कास्ट रिजिडिटी, जातिगत कठोरता भी नहीं आ सकती. ओके, आप किसी को अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं करोगे. यू विल ट्रीट ऑल द कास्ट, ऑल द रिलीजन एज इक्वल, बिकॉज दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया. मल्टीकल्चरलिज्म, सेक्युलरिज्म, हार्मोनियस कल्चर, कल्चर ऑफ टॉलरेंस, यही तो एंशिएंट इंडिया से पढ़ते चले आ रहे हैं. गॉट इट? इंडियन नेशनल मूवमेंट अकोमोडेटेड व्हाट? डिफरेंट आइडियोलॉजीज. सोशलिज्म भी है, सोशलिस्ट पार्टी भी है, पीस एंड ट्राइबल्स कॉन्फ्लिक्ट भी है, नेशनल मूवमेंट, ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट भी, रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस भी, देयर आर रिवॉल्यूशनरीज आल्सो. तो हमने कितने सारे आइडियोलॉजीज को एकोमोडेट किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में. तो हम कट्टर कैसे हो सकते हैं भाई? वी विल बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन आवर थॉट, वी विल ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव इन आवर बिहेवियर. गॉट इट? So this is another important aspect of culture, and this is also purpose of education. Man new man कैसे बनेगा? So when he is familiar with his history, when he is familiar with the glorious history, when he is familiar with the independence movement of India, the great personalities of India, ठीक है, the great achievements of India's past. Clear? If you are familiar
with all this, if you are familiar with the teachings of Bhagavad Gita, if you are familiar with the teachings of Ramayana, this will make you more cultured. This will make you new man. It does not matter that you are Hindu or Muslim. Even APJ Kalam was also, okay, he was also continuously reading what? Bhagavad Gita. He was inspired by the teachings of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita के teaching से कलाम बहुत ही ज़्यादा inspired. Got it? This is the most important point here. So Bhagavad Gita and Ramayana, Gandhi says that, okay, they should be taught to the students. And the teachings of Bhagavad Gita, the teachings of Ramayana will promote what? This will make the man new man. The person will be more cultured. When you, for example, it has been the Ramayana, right? Now it's in the form of serials. ठीक है, आप उस सीरियल को उठा के देखो, सीरियल की बात कर रहा हूं मैं, किताब अगर नहीं पढ़ पा रहे हो मत पढ़ो, आपको क्या दिखेगा? बार बार धर्म और नैतिकता, रिलीजन एंड मोरालिटी, राइट? वाई राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम? वाई इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम? बिकॉज ही इज एन आइडियल सन, he is an ideal husband, right? He is an ideal king. ठीक है, उस समय डेमोक्रेटिक, ये उस समय मॉन्टेस्क्यू ने अपनी थियरी नहीं दी थी, तो एक आइडियल किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये बात लोगों को कैसे समझा सकते हो? स्टोरीज से समझा सकते हो। उस समय रूसो के थॉट्स नहीं थे, उस समय कांट के आइडियाज नहीं थे, आप स्टोरी से बता सकते हो कि हाउ एन आइडियल किंग शुड बिहेव। सो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इज एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि प्रजा के प्रति टुवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट्स द किंग must be responsible and responsive. That is one of the most important. And that we see. Gandhi is saying that for this reason, Bhagavad Gita and Ramayana should be taught to the students. There are many other important teachings in the Bhagavad Gita. And said that, Gandhi said that this aim is one of the most important aim of education. Because this will promote what? This will do what? Is spiritual upliftment of a man. ठीक है? Make you more mature. And when you become new man, it is a symbol or indication that what has happened is spiritual upliftment. Is spiritual upliftment has taken place. आपका spiritual upliftment भी हुआ है. Got it? Clear? Now, if we say the third purpose of education should be harmonious development. The third purpose of education should be harmonious development. And how this harmonious development will take place? अभी जो मैंने बताया, 3H, then 3R, then bread and butter aim of education, then cultural aspect, okay, all will ensure what? Harmonious development. ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी? Harmonious development को ensure करेंगी. So that should be the basic purpose of our education. Clear? And next point, what is the next aim of education? So read this: promoting morality among individuals. Promoting morality among individuals. That should also be the purpose of education. And for that reason, in UPSC GS mains paper, which paper has been added? GS paper 4. और कितने मार्क्स का है? 250 marks. Got it? GS paper 4 has been added. Got it? So this is also one important point, that essay is also asked, that you should write essay so that your personality could be tested. So education का एक purpose क्या है? Promoting morality among individuals, that we could decide, okay, we could develop a sense that what is right and what is wrong. This is a very simple explanation of the morality. What is right, what is wrong. अगर आपके पास ये समझ है, it means you are having the understanding of morality. If you understand, if you have this sense, it means you understand values, you understand what? Manners. You understand values and manners. If you have this sense, you understand values and manners. And if you understand values and manners, if you have the understanding of what is right and what is wrong, then a man become new man. Because in this case, what we see that his personality will be mounted completely. उसकी personality पूरी तरह से क्या हो जाएगी? बदल जाएगी. Got it?
He will start believing in Satya. He will start believing in Asteya, not to still truthfulness. He will start believing in okay the importance of thoughts, words. ठीक है, तो ये सारी चीजें एजुकेशन से आती हैं. सो द बेसिक पर्पज ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रमोट morality also, truth and you can say non-violence also. Okay, now the ultimate aim. What is the most important aim? Write this: most important aim or ultimate aim of education. What is the most important aim or ultimate aim of education according to Gandhi? इतने सारे एम आपने पढ़ लिए, मैं आपसे पूछूं कि एजुकेशन का व्हाट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम? बताइए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी? हम्म, गुड, मैन न्यू मैन. देखो, गांधी सेज दैट व्हेन यू रियलाइज हु एम आई, जब आपको इस बात की समझ आ जाए, ओके, सो दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन. ओके, when the person gets this sense or understanding that who am I, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इस धरती पे हम क्यों हैं. ठीक है, टाइम ही नहीं मिलता सोचने का कि आखिर हम हैं क्यों, कब तक हैं, क्या करके जाना है. दे डोंट हैव दिस. ठीक है, गॉट इट. ओके, सो दिस अंडरस्टैंडिंग is the main purpose of education, to understand yourself. When you will realize who am I, when you will start understanding yourself, right? This अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, जब आप अपने आप को समझने लगोगे. ठीक है, अब आप बताओ, ठीक है, कितने लोग अपने आप को समझते हो? व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, गॉट इट. व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ योर existence, when you start understanding the purpose of your existence, okay, when you start understanding the meaning of your existence, the purpose of your existence, clear? In this situation, when you start understanding, अब आप बताइए कि who am I? What is your answer? Who am I? कौन हूं आप? क्यों हो इस धरती पे? जवाब दो इसका. दो चार आंसर मैं सुनना चाहता हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम, किससे स्टार्ट करें? एनी वन ऑफ यू, अपने चॉइस से बताओ. Who am I? Why you are in this world? क्यों हो, क्या करना चाहते हो आप? Exactly. Now what Akash is saying, okay, what is his purpose in his life? इनका पर्पस क्या है? इसमें इन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कि मेरे पास ऑडी आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, पोर्शे आ जाए. ये इन्होंने कहीं नहीं कहा. इन्होंने पूरे आंसर में क्या कहा कि मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ का, कि मैं दूसरों के लाइफ को बेहतर बना सकूं. दैट इज द सोल पर्पस ऑफ माई लाइफ. दिस वॉज द एसेंस ना, कि मैं दूसरों के लाइफ में कैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. दिस इज हिज पर्पस ऑफ लाइफ. तो आप बताओ, व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट पर्सनालिटी और ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ आकाश? इट इज मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म. क्या है? Spiritualism. Got it? It's not materialism. It's spiritualism. At the end of the day, you will have to understand that कार ज्यादा important नहीं है. कार में बैठने वाला इंसान ज्यादा important. अगर कार को इंसान ड्राइव ना करे, बशर्ते ये टेस्ला ना हो, तो कार सिर्फ एक टीन का डब्बा है. चाहे वो 10 लाख रुपए की कार हो या 10 करोड़ की कार हो, उसको ड्राइव करने के लिए उसके अंदर एक इंसान का होना बहुत जरूरी है. गॉट इट? सो व्हाट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? गुड्स, मटेरियल थिंग्स, और वी शुड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स. वी शुड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स, वी शुड यूज गुड्स. ठीक है, बट व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, और व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए. और हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं और व्यक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट ही अपना उल्टा है.
राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. We should love humans and we should use goods. And what we are doing now? We are using humans and loving goods. This is what? Consumerism and materialism. तो पहले तो आप ये समझ लो कि in this world what is more important for you? It is materialism or spiritualism. आप ज्यादा importance क्या दोगे? तो there should be a balance of both these two things. दोनों का क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. पहली चीज materialism and spiritualism. In the words of Vivekananda also, there should be a proper balance. ठीक है ना? Materialism में भी what is not accepted over consumerism is not accepted. Over consumerism is not accepted. ठीक है? आपके पास पैसा बहुत, ठीक है, आप घड़ी खरीदना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है 10,000 की भी घड़ी ले सकते हो और 5 लाख रुपए की भी घड़ी खरीद सकते हो. 5 लाख की खरीदोगे तो बार बार लोगों को बताना पड़ेगा. वो 3 इडियट्स मूवी देखा ना, देख लो मेरी घड़ी मैंने 5 लाख रुपए में ली है. तो आपका काम तो बढ़ गया ना. एक तो आपने महंगा खरीदा, ऊपर से लोगों को बार बार बता रहे हो, और फिर ये भी बताना पड़ेगा ये कॉपी नहीं है, चांदनी चौक से नहीं खरीदा है, ये ओरिजिनल है. कितना काम बढ़ गया आपका. इतना काम बढ़ाने की जरूरत क्या है? ओके, बिलीव इन सिंप्लिसिटी. ठीक है ना? Okay, so this is the basic purpose of education. Who am I? When you start, just what we think generally, these are general thought that my family is my world. But when you start believing that the world is my family, this will make you what? Spiritual. Got it? Generally what we thought, generally what we think, what we believe, that my family is my world. So your actions will be guided by your selfish interest. ऐसा होगा. If my family is my world मान रहे हो, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी में आप आईएएस हो गए, तो फिर तो माई फैमिली इज माई वर्ल्ड और उसी को द बेस्ट वर्ल्ड बनाने में लग जाओगे. गॉट इट? ओके, तो द वर्ल्ड इज माई फैमिली. व्हेन यू आर गाइडेड बाय दिस थॉट, दिस मीन्स व्हाट? ओके, नाउ यू हैव रियलाइज्ड दैट हु एम आई. Material things don't hold any importance in my life. I need material things to support my life. Clear? But the basic and ultimate purpose is to serve the mankind. I will earn money. But when I will earn money, I will contribute others, okay, in all around development of their personality with the help of this money. टाटा कितने पैसे अपनी डोनेट कर देते हैं बताओ? ओके, वो क्यों करते? क्यों करते? चाहते तो अपने पास रख सकते. तो उसका भी एक पर्पज है कि हमने इसी सोसाइटी में रह के वो प्रोग्रेस हासिल की है. इस अगर हम सोसाइटी में आगे बढ़ गए, हमने कोई अचीवमेंट पाई, तो वो अचीवमेंट सिर्फ अकेले का मेरा नहीं है. This is the achievement of my family and my society as a whole. So we should contribute to our society. And when you start believing in that situation, you are awakened. इस situation में आप क्या हो गए? You are awakened. You have become what? New man. ठीक है? You are now awakened. You are now new man. Got it? And this is what? Self-realization. Self-realization. This is self-realization. People think that money should be the ultimate objective of my life. But what is the reality? If you do good work with good intentions, money is the byproduct. पैसा आएगा जितना आना हो. मेरी बात समझ गया ना? But your intentions must be pure. This is what? Self-realization. Clear? So what should be the objective of education? To get more and more wealth, to get more and more power. For that you are going to become IAS? No. You are not opting to become IAS to get more power and more wealth. You will be a government servant when you become IAS. ध्यान से समझना इस बात. Okay, you are not going to get more power, but you are going to serve people and you will get a lot of opportunity to serve the people. मेरे पास वो opportunity बहुत कम है, आपके पास वो opportunity ज्यादा हो. ठीक है? आपका काम डाइवर्सिफाइड है और अपने काम से आप इस दुनिया को और एक बेहतर दुनिया बना सकते हो. जहां आप रहोगे उस जगह को और बेहतर बना सकते हो. Got it? So that is one of the most important thing, and that's why Gandhi says that this is one of the most important thing in our life, that we should have this realization that the basic purpose of our life is to promote goodness in the society. यही basic purpose होना चाहिए हमारी life का. Got it? Self realization, and this is the meaning of self realization. Got it? Have you got this idea? What is the meaning of self realization according to Gandhi?
और ये सेल्फ रियलाइजेशन एजुकेशन से ही तो होगा। यस, ये सेल्फ रियलाइजेशन एजुकेशन से ही होगा। नाउ गांधी ऑल्सो टॉक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोसाइटी, टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोसाइटी। आपने सबने ये वर्ड सुना होगा, एंड द नेम ऑफ दिस सोसाइटी इज सर्वोदय सोसाइटी। सुना है सर्वोदय सोसाइटी? हैव यू हर्ड सर्वोदय? सर्वोदय, सर्व, सर्व मीन्स व्हाट? All. Sarvodaya. Sarva means what? All. Sarva simply means what? All. And Uday means upliftment. Upliftment. Sarvodaya means upliftment of all. It means he is talking about universal upliftment. He is talking about universal upliftment. आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. It's not only history. He is talking about universal upliftment. Sarva Uday. Sarvodaya. Upliftment of all. Clear? So this is self-realization. When you believe in not upliftment of yourself, but when you start believing in the upliftment of all, at the individual level also, this is what? Self-realization. Got it? For example, I am teaching, okay, and I have studied a lot. Okay? So before I quit this field, I thought that I should do what? I should teach whatever I know, and I should post it on internet. एक साल लगेगा, ठीक है, 2 साल लगेगा, ठीक है. तो मुझे अपने नॉलेज से क्या करना है? जो कुछ भी वो मेरा नहीं. वट एवर आई हैव स्टडीड इज नॉट माइन. ऑल आवर आइडियाज आर द बोरोड आइडियाज. आप कोई एक ऐसी बात मुझे बता दो जो आपका खुद का यूनिक आइडिया हो. सोच के बताओ, जो आपसे पहले किसी ने नहीं सोचा हो. कुछ है ऐसा दिमाग कि आपसे पहले वो बात किसी ने नहीं सोची? अगर वैसा होता तो हम मार्क जुकरबर्ग के साथ सीसीडी में बैठे होते. मेरी बात समझ गया ना? एलन मस्क के घर डिनर विनर कर रहे होते. ऐसा आइडिया तो अपने पास है ही नहीं. ऑल आवर आइडियाज आर द बोरोड आइडियाज. क्लियर? तो जब सारे आइडियाज बोरोड आइडियाज है, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन आइडियाज को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करें? यस, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस सेल्फ रियलाइजेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. To we all should work in this direction of सर्वोदय सोसाइटी. ये सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी से सर्वोदय सोसाइटी नहीं आएगा. मेरी बात समझ गया ना? आप बैठ के स्पीच दे रहे हो कि गवर्नमेंट लेबर लॉज को और स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बना रही है, और घर में अपने अपने वर्कर्स को आप सैलरी नहीं दे रहे हो, अपने मेड को आप परेशान कर रहे हो, उसकी सैलरी नहीं दे रहे हो, उसको परेशान कर रखा है आपने. ठीक है, तो सर्वोदय सोसाइटी कहाँ से आएगा भाई? ओके, सर्वोदय सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ all. Now the same idea of Sarvodaya society, in the last video I have discussed with you. क्या डिस्कस किया था याद करो? जाकिर हुसैन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल्स रिटन बाय गांधी इन हरिजन. ओके, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया, एंड दैट बिकम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसमें बेसिक एजुकेशन की बात की गई. द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाज बुनियादी तालीम. द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाज नई तालीम. द फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाज national education. The fifth was Vardha scheme of education, and the sixth was life education. इतनी चीजें उसमें थी. And all these components that I've discussed with you, basic education, बुनियादी तालीम, नई तालीम, national education, Vardha scheme of education, and life education, all are guided by the idea of developing which society? Sarvodaya society. So what is the basic aim of education? To develop the society in the form of what? सर्वोदय सोसाइटी. ठीक है, तो अगर आप, ये भी आ गया गांधी के आइडिया में, सर्वोदय सोसाइटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सर्वोदय सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं? आप ये बताओ. सबसे पहले तो एक कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्वोदय सोसाइटी कैसे होगा? लेट दिस सर्वोदय सोसाइटी, ओके, education will play an important role. Okay, government policies and programs will play an important role. Individual efforts will play an important role, right? Government policies and programs will play an important role, and individual efforts will also play an important role. So education will play an important role. So which kind of education? What should be the, you can say that, main components of this education when we are talking about Sarodaya society? Education के किन किन parameters की बात हम कर सकते हैं? Okay, so in the age group of 7 to 14, we must provide free and compulsory education. ये गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 7 to 14 द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड व्हाट? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ठीक है,
सोसाइटी में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं हो जो इलिटरेट रह जाए। मेरी बात समझ गया? उसको एक बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, दैट आफ्टर 14 years ऑफ एज अगर वो कोई क्राफ्ट भी करता है, पॉटरी क्राफ्ट में भी इंडल्ज हो जाता है, तो उसको रीड राइट और अर्थमेटिक का नॉलेज, अर्थमेटिक से क्या कर सकता है, कैलकुलेशन, अपने बिजनेस को और वो क्या कर सकता है, बेहतर कर सकता है। मेरी बात समझ गया ना? दैट्स वाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज नीड। अभी भी आज की सोसाइटी में भी वी केम अक्रॉस मेनी सच पीपल, फॉर एग्जाम्पल ओल्डर वुमेन सेलिंग वेजिटेबल्स, एंड यू विल फाइंड दैट शी इज नॉट स्किल्ड इन काउंटिंग द मनी। गॉट इट? कई बार वो ज्यादा पैसा लौटा देते हैं। नाउ इट बिकम्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया है तो हम उसको वापस कर दें, क्योंकि वो प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, माहौल नहीं मिला, पढ़ाई नहीं हुई, तो वो काउंट सही ढंग से नहीं कर पा रही है। लेकिन हमारी ही सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बुजुर्ग असहाय महिला अगर ज्यादा पैसा दे देगी तो चुपचाप लेके निकल लेंगे कि चलो 2 सिगरेट और आ जाएगी। मेरी बात समझ गया ना? तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। और वो प्रॉब्लम उस औरत के साथ क्यों है? क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो हमने दिया, शायद वो एजुकेशन उस तक पहुंच नहीं पाया। गॉट इट? सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड गेट दिस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। एजुकेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होना चाहिए? राइट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, ओके, शुड बी मदर टंग। This should be the medium of instruction. Mother tongue should be the medium of instruction. सबसे important point. Mother tongue should be medium of instruction. Because the children are comfortable in what? Or we all are comfortable in our mother tongue. So if you are comfortable in expressing yourself, you will be comfortable in asking questions. Okay? Doubter is the man of science. Okay? बट अगर लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा, हमने क्या किया, लोगों से उनकी भाषाएं छीन ली, वर्नाक्यूलर छीन लिया, उनको नई भाषा दे दी, इंग्लिश दे दी, और हम ग्रामर सिखाने लगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, समझो इस बात को। जब आपके ऊपर एक नई लैंग्वेज इंपोज कर दी गई, इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका पूरा ध्यान चला जाएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पंक्चुएशन और क्या क्या कंजंक्शन होता है ये सीखने में लग जाएगा। और आपको सीखना क्या था? आपको सीखना था, आसमान में देखना था ऊपर और देखना था फिजिकल इन्वायरमेंट को। सन दिखा तो आपको देखना था, यार व्हाट इज दिस सन, ठीक है, सन। मॉनसून आपने देखा तो आपको सवाल करना था, ठीक है, कि एक पार्टिकुलर सीजन में ही बारिश क्यों होती है, गर्मी अभी क्यों है, ठंडी अभी क्यों है। आपको अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को देखना था और उस फिजिकल इन्वायरमेंट को देख के क्वेश्चन करने थे। डाउटर इज द मैन ऑफ साइंस। मेरी बात समझ गया ना? आप मिट्टी को देखते तो आप सवाल पूछते, ये रेड सॉइल है कि ब्लैक सॉइल है कि लेटराइट सॉइल है, सॉइल अलग अलग कलर की क्यों है, इन सॉइल की क्वालिटीज क्या होती है। आप ये सब नहीं पूछोगे, आपका पूरा का पूरा ध्यान नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सीखने में चला जाएगा और इंग्लिश वाली मैडम का जलवा बरकरार रहेगा, ठीक है। तो क्या है, डाउटर इज द मैन ऑफ साइंस। तो किस चीज को ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने क्या किया, हमारे अंदर यूज ऑफ रीजन को प्रमोट होने दिया कि उसको सप्रेस किया? बताओ, सप्रेस किया। दैट्स व्हाई व्हेन आई से दैट एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया was a reflection of horrors of colonialism. Yes, it is true to some extent. They tried to suppress what? Okay, our thought process, use of reason. Got it? That is the most important. Okay, मेरी बात समझ गया ना? You should ask question about physical body. हर्ट कहाँ होता है, ठीक है, पूछना चाहिए ना, हर्ट क्या है, ठीक है, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, सेलेशियल बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्या इस क्वेश्चन का जवाब वर्नाक्यूलर्स में नहीं दिया जा सकता? इज इट नॉट पॉसिबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द वर्नाक्यूलर? यस, इट इज पॉसिबल। ऐसी कौन सी चीज है जिसका जवाब वर्नाक्यूलर्स में नहीं है? ठीक है, वर्नाक्यूलर्स में जवाब है हर चीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो सर्वोदय सोसाइटी कैसे आएगा? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी व्हाट? ओके, यू कैन से दैट मदर टंग। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन वी से दैट सोशल स्टडीज or humanities subjects, the students, okay, should be given the opportunity to learn the humanity subjects also? Yes,
आपकी एजुकेशन में दोनों चीजें आनी चाहिए। वो क्या है? ह्यूमैनिटी, ओके, प्लस साइंस, दोनों ही होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू थिंग्स, ठीक है। ह्यूमैनिटी में क्या है? हिस्ट्री है। ह्यूमैनिटी में क्या है? ज्योग्राफी है, ओके, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपको पता होना चाहिए, ओके। When we talk about science, so we are talking about here, okay, general science. We are talking about botany. We are talking about zoology. We are talking about astronomy, right? We are talking about chemistry. Okay, this is what science. So in our education system should be a combination of both these two things. Okay, got it? Today you will find that you will come across a lot of students. बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि उनको नहीं पता है, गॉट इट, व्हाट अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इंडिया में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे कोई बन जाता है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है, दे डोंट नो अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम, दे डोंट नो द फंडामेंटल राइट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं की है तो आर्टिकल आपको भी कहाँ याद थे? याद थे क्या? प्रियम्बल आपको भी नहीं पता था? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मीनिंग आपको भी नहीं पता था? 5 ईयर प्लान्स के बारे में आप भी नहीं जानते थे? ये है हमारी एजुकेशन सिस्टम की हॉलोनेस। ये हमें स्कूल में सीख के आना चाहिए, जो हम कोचिंग में सीख रहे हैं। जो अभी हम गांधी के बारे में सीख रहे हैं, ये हमें कहाँ सीख लेना चाहिए? स्कूल में। और अभी जब टैगोर बताऊंगा तो टैगोर बताएंगे तो कहेंगे प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे स्कूल से आ जा रहे हैं और बाद में उनको ये सारी चीजें सीखनी पड़ रही है। द रीजन इज बुक। Schools and academics are overemphasizing on the need of the texts or the books. Coaching institutions are overemphasizing on the need of material. क्लास के बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम, टीचर 10 मिनट बोलेगा और कहेगा बाकी प्रिंटेड नोट से पढ़ ले। कहाँ से बच्चा समझ पाएगा भाई? टैगोर ने बहुत डांट लगाई टीचर्स को। टैगोर ने कहा ये नहीं होना चाहिए, ओवर एम्फेसाइजिंग ऑन द नीड ऑफ टेक्स्ट इज नॉट गुड। टीचर मस्ट डिस्कस द थिंग्स विद द स्टूडेंट एंड द टीचर मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर इट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अलग कनेक्शन होता है, ओके। सो this must be there. You will come across a lot of teachers from a different subjects. So if each and every teacher will start promoting curiosity in your mind, okay, will start promoting the use of reason in your mind, what will happen? This will make you better. इसी से आप बेहतर बनोगे, okay, ये टैगोर ने कहा। Now this point, okay, so this is one of the most important thing. Now apart from this, is it also important, okay, to learn creativity or creative works like drawing, like music, like dance? Yes, ये सब भी हमारी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, all should be the part of our education, because with these artistic expressions, drawing, music, dance, we are doing what? We are expressing ourselves. दिस इज प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सप्रेसिंग आवर सेल्स एंड वी आर प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी, राइट? वी आर एक्सप्रेसिंग आवर सेल्स, वी आर प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी शाई इन सिंगिंग, इन डांसिंग। अगर आप उनको कहोगे आओ डांस करते हो, आप डांस वांस करना चाहिए, वो बेचारा चुपचाप खड़ा रहेगा। गलती उसकी नहीं है, मेरी बात समझ गया ना। गांधी यहाँ भी कहते हैं कि वाई रेसिडेंशियल स्कूल्स आर नीडेड, हॉस्टल्स आर नीडेड, एकोमोडेशंस आर नीडेड। ये आपकी पर्सनालिटी की वीकनेस को दिखला रहा है, क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी को बाहर नहीं ला पा रहे हो। आप सोनू निगम नहीं हो लेकिन फिर भी गाना गा सकते हो। मेरी बात समझ गया ना। आप माइकल जैक्सन नहीं हो लेकिन नहीं, दो चार मतलब स्टेप तो करके दिखा ही सकते हो, ओके। सो व्हेन वी डू दिस, generally this is a way of expressing ourselves. We can be well connected with the people in the society, okay, and this is needed, okay, because it also makes us more creative, more imaginative, and it is helpful in exploring all around personality, okay, in our body. Got it? This is one of the most important part, okay. Now the next important, what about agriculture? Gandhi will say that yes, agriculture should be made a domain of education. इसको भी क्या करना चाहिए? डोमेन ऑफ एजुकेशन, ठीक है।
जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आप पढ़ते हो ना, वैसे ही एक सब्जेक्ट पढ़ो एग्रीकल्चर, और उसमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स। गॉट इट। साइंस पढ़ते हो तो लेबोरेटरी है, एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो खेत में जाके हल कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता है। ठीक है, वो होना चाहिए। गांधी सेज दैट एग्रीकल्चर दिस शुड बी अ डोमेन ऑफ एजुकेशन, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ वी आर डूइंग एग्रीकल्चर, so we are doing what, physical exercises. This will make our body fit. Okay, if we have a fit body, our mind is also fit. Clear? और वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज द सेम। और अल्टीमेटली जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? so that is also an important part here now. Okay, right, next. Okay, social skills. Social skills, Gandhi also focuses on social skills. Social skills भी ज़्यादा ज़रूरी है। Gandhi also focuses on the social skills. Okay. Now I'm asking a simple question that how social skills can be promoted. Social skills कैसे promote होगी? If you will live in a isolated habitation or if you live in a community or group, आपकी social skills ज़्यादा बेहतर कब होगी? Exactly, community engagement. Your social skills will improve. ठीक है, so we should always remember. Okay, for example in school we talk about as school. तो स्कूल में अगर हॉस्टल लाइफ हो, रेजिडेंशियल ओके एजुकेशन सिस्टम हो, तो वहाँ पे चाइल्ड का ग्रोथ ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ गया ना? आज होता क्या जा रहा है, जैसे बच्चों को भी देखो, दे आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ओके मोबाइल फोन्स, ठीक है, टेलीविजन, वीडियो गेम्स। क्या वो बाहर जाके खेल रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ? ये टेंडेंसी कम होती चली जा रही है। धक्का देके भगाना पड़ता है, चलो जाओ बाहर जाओ खेल के आओ, वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं घर में ही रहूंगा, वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सोशल स्किल के लिए जरूरी है कि वी मस्ट इंटरेक्ट विद द अदर्स, एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द most important domain of education. Okay, and the next point is that, okay, read this, analyzing skills. Analyzing skills, analyzing skills, that should also be a part of the education or the focus of education. Analyzing skills. And what is analyzing skill here? Analyzing skill क्या? You must have the sense to analyze the things. यूपीएससी के क्वेश्चन में कितनी जगह होता है? क्रिटिकली कमेंट, एग्जामिन, एनालिसिस। और कांस्टेबल एग्जाम में क्या होता है? टिक लगाओ, व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स। ओएमआर सीट पे पता चल जाएगा। कोई एनालाइज नहीं करना है, कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं करना है। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला यूपीएससी में, ये सब होने वाला है। वाई? ओके, बिकॉज the office which you are going to have requires all these skills. Analyzing skills, आपको analyze करना चाहिए. Okay, now the next important point, read this. Okay, correlated teaching, that is also one important part, or interlinked approach. Correlated teaching, interlinked approach, or interdisciplinary approach. Correlated teaching, interlinked approach, or interdisciplinary approach, this is also an important part. Correlated teaching, interdisciplinary approach. Clear? In this way, you can learn better and you can bring out the best in your personality. Okay, this is Gandhi's teaching. Okay, now the next important part is, let's discuss about this also. Teacher, role and responsibility of a teacher. क्या होना चाहिए? Education तो समझ लिया, now role and responsibility of a teacher. Now tell me, the teacher should be robotic teacher or reflective teacher? ये concept पहले भी बता चुका हूँ. The teacher must be reflective. Robotic teacher will do what? Will focus on the text. ठीक है, प्रसाद वितरण, printed material. Reflective teacher, ठीक है, will discuss the thoughts with you. Clear? This is one of the most important point. और टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? हाई सेंस और हाई लेवल ऑफ मोरालिटी. हाई सेंस और हाई लेवल ऑफ मोरालिटी. Got it? That is one of the most important part according to Gandhi. Clear? And there is a personal relation between the students and between the teachers, and that's why teachers should have the high level of morality. Okay, and they should set standards. And Gandhi also uses a word, and the word is mother teacher for the
teachers. That is a very important word. Highlight it. Mother teacher for the teachers. Okay. Why this word mother teacher for the teachers? Because the teachers must be really like the mother of the children. अच्छा देखो क्या होता है. If you have some problems, concerns, you can freely share it with your mother. Okay. But what's happening in today's world? You will find that, okay, there are so many examples where the students, okay, are not able to share their griefs, concerns or the problems with their teachers. क्योंकि जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो टीचर है ही नहीं, वो सेलिब्रिटी है. ठीक है. तो यू आर नॉट एबल. सेलिब्रिटी टीचर. ठीक है, ये आज का टीचर है, लिख लो. मदर टीचर की जगह क्या आ गया है? सेलिब्रिटी टीचर. ठीक है, मदर टीचर की जगह सेलिब्रिटी. ठीक है. तो गांधी टॉक्ड अबाउट मदर टीचर. ओके. नाउ द टीचर्स आर द सेलिब्रिटी टीचर्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ whatever we have discussed, some ideas which Gandhi learned, basically he learned it from others. There was a very famous book written by Ruskin. The name of that book was Unto the Last. इसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं अफ्रीका पढ़ाऊंगा आपको. और Gandhi's ideological influences on Gandhi when I will teach you Unto the Last. In that book, what we see that in that book, Gandhi was very much inspired by that book because that book contains some of the most important teachings. And what are those teachings? One teaching is, okay, welfare of all is our welfare, or the welfare of an individual is contained in the welfare of all. इस बात का मतलब समझ पा रहे हो आप? Welfare of an individual is contained in the welfare of all. It means if you want to ensure your welfare, got it? So you should not think about your individual welfare. You should think about the welfare of the society as a whole. Okay. So if you think about the welfare of the society as a whole, so your welfare is contained in that welfare. ठीक है. जैसे आकाश ने कहा, काश सोसाइटी में गुडनेस लाने के लिए मैं काम करूँ, उसी में तो आपका वेलफेयर भी है. This is the same idea. What you have discussed with me is the same idea that has been given by John Ruskin. ठीक है. क्या यार तुम बजा रहे हो बार बार बेल? क्लियर? दैट्स द सेम आइडिया प्रोमोटेड बाय जॉन रस्किन. ठीक है ना. वो जॉन रस्किन ने इस आइडिया को. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफेशन. एम आई ऑडिबल? ओके. वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज द सेम. ओके. वैल्यू ऑफ द बार्बर, वैल्यू ऑफ द लॉयर should be equal. Okay. And the third important idea where we, okay, so these ideas guided the thoughts of Gandhi with respect to the education. So इनकी पूरी की पूरी education system में, even when he accept the caste system, four varna system, basically four varna system in its original form, it is guided by what? Okay, it is guided by, okay, the, you can say that the need of the India at that time. India में जो need थी, poverty और unemployment. ठीक है, ये सबसे बड़ा challenge था, तो ये उसी से guided था. Okay, now I hope you have understood this topic. Okay, Gandhi's ideas. आप 150 words में लिख सकते हो क्या? Gandhi's ideas of teaching. So write a question. Question is, ठीक है, question is, discuss about Gandhi's outlook on education. Discuss about Gandhi's outlook on education. इसमें discipline और दूसरे points आप include कर सकते हो, right? Gandhi's outlook on education. Discuss about Gandhi's outlook on education. Okay. Yes. I will discuss the topic Gandhi's entry in Indian politics, and there I will discuss about Gandhi. ठीक है ना, कि गांधी का जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, what is the meaning of that concept of राम राज्य? Okay, Gandhi was an anarchist. In what sense he was an anarchist? ठीक है ना, ठीक है. Gandhi believed in class cooperation. He does not believe in class conflict. ठीक है ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, तो वो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे डिफर करता है. इन वर्ल्ड हिस्ट्री आई विल डिस्कस दिस पार्ट, मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म, यहाँ का कवर हो जाएगा.
और गांधी में मैं गांधीसम बता दूंगा मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो आपके पास एक अच्छा आंसर होगा। और लास्टली एक वीडियो भी रिलीज कर दूंगा कभी पूरे इस आइडिया पे, ठीक है ना, पॉलिटिकल थॉट्स पे। नाउ देखो, गॉट इट आकाश, ओके। व्हेन आई विल डिस्कस इन टोटालिटी, ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आपको दोबारा कोई बुक वुक से अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। अब इसमें क्या अपडेट करोगे, इतना सारा कंटेंट तो आपके पास हो गया। गांधी आउटलुक ऑन एजुकेशन, मैक्सिमम कितना लिखना है, 200 वर्ड, 250 वर्ड। इसमें और भी अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, देयर वाज अ एसे, ओके, जैसे देखो गांधी, ओके, टॉक्ड अबाउट अ कॉन्सेप्ट एंड दैट इज राइट सोशल सेंस, ठीक है। गांधी ने इसकी बात की थी, सोशल सेंस, ओके, 7 सोशल सेंस की बात की थी, 7 सोशल सेंस की बात की थी। और इसमें से वन सोशल सेंस वाज वन सोशल सेंस वाज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ये ऐसे है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये यूपीएससी कैसे। अब आप एक बात बताओ कि जब आप इस एस्से को लिख रहे हो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, तो क्या आप गांधीज आउटलुक ऑन एजुकेशन विल यू राइट अबाउट दिस, यस और नो? यस, लिखेंगे। तो एस्से में तो कंटेंट यूज होना ही होना है, गॉट इट, ओके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लुक एट दिस मॉडर्न वर्ल्ड is what? Progressing, or it is passing through a state of crisis. It's passing through a state of crisis. And we are facing this crisis. What? Knowledge without character. ये उसी crisis का हिस्सा है. When we say that today missiles are guided and men are misguided. Missiles are guided and men are misguided. This is the reflection of the same thing. Knowledge without character. Okay. एजुकेशन का जो पर्पज है ये क्या होना चाहिए, नॉलेज बिल्डिंग, राइट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग। लेकिन आज हमारी प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ हमने जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है उसी को हमने क्या समझ लिया, नॉलेज समझ लिया, राइट। वी गिव इंपॉर्टेंस टू द पीपल, ओके, looking at their qualifications or the degrees, clear, and you will find that the people who are highly qualified, जिनके अंदर एकेडमिक मेरिट है, they are not, many of them are not able to handle the challenges of their life. अपने जीवन में जो उथल पुथल चल रहा है उस उथल पुथल को वो सॉल्व करने की स्थिति में नहीं है। और ये बिल्कुल हंसने की बात नहीं। अभी कुछ टाइम पहले एक मैंने न्यूज देखा था कि कोई आईपीएस ऑफिसर था या आईएएस ऑफिसर, तो उसकी वाइफ की डेथ हुई किसी बीमारी से और उसने हॉस्पिटल में जाके क्या किया, खुद को सूट कर लिया। बिहार का एक आईएएस था, दिल्ली में आके उसने सुसाइड कर लिया रेलवे ट्रैक पे। प्रॉब्लम क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, मदर और वाइफ के बीच में। इस प्रॉब्लम को लेके उसने सुसाइड कर लिया। अभी एक नीट टॉपर था जिसने सुसाइड कर ली। अभी एक बच्चा मुखर्जी नगर में न्यूज आया हो, ठीक है, वॉट एवर बी द रीजन, इट इज स्टिल इन्वेस्टिगेटेड, वी डोंट नो। उसको मेंस लिखना था, ही वाज हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ओके, और मतलब वॉट एवर आर द सर्कमस्टेंसेस, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्लियर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, are we progressing or are we passing through a state of crisis? We are passing through a state of crisis. कलकत्ता का इंसिडेंट सुना आपने, वो भी क्या है, मिसगाइडेड मैन, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उसने पढ़ाई करी होगी ना, 10th क्लास तक पढ़ा होगा, 12th क्लास तक पढ़ा होगा, ओके। जो आरोपी है उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी होगी। दिल्ली में निर्भया केस हुआ, ठीक है। तो देखो पूरी कहानी क्या है कि चाहे हम जितना प्रोग्रेस कर लें, लेकिन जब तक एजुकेशन सिस्टम में कैरेक्टर बिल्डिंग और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को बच्चों के बीच में हम ज्यादा बेहतर ढंग से इंकलकेट नहीं कर पाएंगे तो चैलेंजेस और बढ़ती चली जाएंगी। और नाउ टेल मी वन थिंग, डिजिटल वर्ल्ड हैज फर्दर मैग्निफाइड दिस चैलेंज और नॉट, हैज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस चैलेंज और नॉट। पहले से ही ये चैलेंज ज्यादा था, उसको कंट्रोल करने की जरूरत थी, और हमने क्या किया, डिजिटल वर्ल्ड में उस चैलेंज को और ज्यादा बढ़ने दिया। और इसका नतीजा ये होगा, आज से 10 या 15 साल बाद अगर हमने चीजों को काउंटर नहीं किया, घर में बैठे बैठे लोग पागल होने लगेंगे। द पीपल विल स्टार्ट बिकमिंग गेटिंग मैड सिटिंग द हाउसेस, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो आउटर इन्वायरमेंट है, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन है, दैट इज नाउ कन्फाइनिंग, नाउ दे आर confined within the four walls,
ठीक है, कोविड में आया वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, तो इससे जो आपका एक कम्युनिटी रिलेशनशिप था, ये भी क्या होता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है, और लोग कैलकुलेटर हो गए, उनको लगता है यार हमने ट्रेवल टाइम सेव कर लिया 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 आवर्स ज्यादा मैं काम करूंगा, मून लाइटिंग करूंगा, और उससे मेरे पास और भी ज्यादा पैसा आएगा। तो आप जो पैसे की तरफ भाग रहे हो, मेटलिज्म, ये मेटलिज्म नहीं, ओवर कंज्यूमरिज्म और मेटलिज्म, and this will bring crisis in your life. Got it? So we need what? A balance in our life. Clear? Today we see, okay, different billboards, magazines, advertisements. There are hundreds and thousands of products that are appearing. हम नहीं भी देखना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें दिखाया जा रहा है। क्यों? आपने मोबाइल खोला व्हाट्सएप पे, ठीक है, मम्मी को मैसेज करने के लिए कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तब तक उधर से एडवर्टीजमेंट आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। गॉट इट? तो इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है हमारे सामने, और वो इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, हमारी जो डीपेस्ट डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को और भी ज्यादा क्या कर रहा है, बढ़ा। द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग फ्लोटेड, द एडवर्टीजमेंट दैट वी सी इज प्रोमोटिंग आवर डिजायर्स। कहाँ तो हमारी लड़ाई, हमारा कल्चर क्या सिखाता है कि हमें अपने डिजायर्स को क्या करना है, वी हैव टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, वी हैव टू कीप अ चेक ऑन आवर डिजायर्स। फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, जैनिज्म, पूरी कहानी ही यही है कि हमें क्या करना है, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी डिजायर को डीपेस्ट डिजायर बनाया जा रहा है, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कंज्यूमर वर्ल्ड। गॉट इट? televisions are there, movies are there, okay, and they try to project that these things are very much essential in our life. We cannot compromise with this. अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे लिए चाहिए, ठीक है। पहले से हम सुनते आए कि अगर आप दिन भर की मेहनत के बाद रात को चैन की नींद लेना चाहते हो, सुकून की नींद लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। गॉट इट? 2 पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और रात को चैन की नींद सो। आजकल क्या है, चैन की नींद सोना है तो स्लीप वेल। मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोमोटिंग आवर डीपेस्ट डिजायर, ठीक है। काउ मिल्क नहीं रहा, वो अमूल मिल्क बन चुका है। चैन की नींद सोने के लिए जीवन में सुकून नहीं चाहिए, स्लीप वेल का गद्दा चाहिए, ठीक है। तो आप देखो किस तरह से हम कंज्यूमरिज्म के ट्रैप में चलते चले जा रहे हैं, राइट? सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझने की जरूरत है, राइट? एंड दिस विल मेक आवर लाइफ मोर बैलेंस्ड, एंड गांधीज एजुकेशन विल हेल्प इन दिस सेंस। गांधी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो थॉट्स है, दैट विल बी हेल्प। गांधी भी तो कहते हैं कि हमें एडिक्शंस को क्या करना चाहिए, वी शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट टेकिंग सिगरेट्स, आप सिगरेट नहीं ले रहे, आपके दोस्त ने कहा 1 सिगरेट बस मेरे लिए, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुमसे नहीं कहूँगा। आपने 1 सिगरेट ले लिया, दूसरी बार उसने फिर कहा, क्या कहा, कहा जस्ट 1 मोर सिगरेट, ठीक है, ये हमारी दोस्ती के नाम, 1 मोर ड्रिंक, 1 मोर सिगरेट, ठीक है। ऐसे क्या होता है, 1 मोर 1 मोर 1 मोर करते करते क्या होता चला जाता है, ठीक है। 1 मोर करते करते वो आपकी बैड हैबिट क्या बन जाती है, दैट बैड हैबिट बिकम्स व्हाट, योर एडिक्शन। एंड मोस्ट ऑफ आवर एडिक्शंस स्टार्ट इन दिस इनोसेंट मैनर। हर वो गलती जो हम अपने जीवन में करते हैं, वो हम पहली बार ही कर रहे होते हैं, right? So most of our addictions start in this very innocent manner. And what Gandhi says, Gandhi का क्या कहना है, that you should be self disciplined. Self discipline means what? If you are self disciplined, then that bad habit will not be a part and practice of your life, okay. You will clearly say no, not a single time, जो गलत है वो गलत है। Got it? So this is one of the most important thing, and Gandhi says that this kind of education is what, value based education, okay। यही education क्या है, value based education, okay। अब now can you say that Gandhi's thoughts on education were very down to earth? It was guided by which thought, top down approach or bottoms up approach, bottoms up approach, ठीक है। And do you think that Gandhi's outlook on education are very holistic, because it's not only catering the social needs of India, it's also catering to the economic needs of India. ये और किस चीज का ध्यान रखता है, कल्चरल नीड्स ऑफ इंडिया,
health needs of Indian people. Okay, it is just a very practical thought on education. It is just a very progressive idea in education system. It is a decentralized approach of education system. It is an integrated approach of education system that keeps in focus the entire community, that keeps in focus the entire society. Okay, that is focused on bringing responsibility and accountability at the community level. That is focused on the promotion of spiritual upliftment of an individual. That is focused on the promotion of all around development of an individual. Okay, and once we are able to ensure the all around development of an individual, तो इससे क्या होगा? The citizens of our country will be empowered. And when the citizens of our country will be empowered, what will happen? Our community will empower, our states will empower, our country will empower. Okay, so that is the most important thing. Okay, that the if you want to ensure your individual benefits, that is not an idea. Okay, you should focus what? Okay, the welfare. Am I audible? Clear? Okay, so this is the point. I hope you have understood this Gandhi topic. आप आसानी से लिख सकते हो. You can write 150 word answer, 200 word answer. If you have to write in 70 words, can you write 70 words में लिख सकते हो? लिख सकते हो. ठीक है. So different formats. Practice writing answer in different formats. This can be 70 word, this can be 150 word. You can write in 250 word. तो अलग अलग formats पे आपको practice करना. Now read this Tagore's outlook about. Yes, please. This is a debate. Got it? That Gandhi was more idealistic, less pragmatic. मेरी बात समझ गया ना? तो यहाँ पे हम वो डिबेट डिस्कस नहीं करना है. ठीक है ना? ये डिबेट जानने के लिए जब आप नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे, गांधी पढ़ोगे, ठीक है, पूरा नेशनल मूवमेंट आपको बताने के बाद आपको मैं इस बात का जवाब दूंगा कि गांधी क्या आइडियलिस्ट थे या प्रैग्मेटिस्ट थे, ज्यादा क्या आइडियलिस्ट थे या प्रैग्मेटिस्ट. गॉट इट? ठीक है, इसका आंसर मैं दे सकता था अभी, लेकिन अभी नहीं देना चाहता बिकॉज वी आर डूइंग अ रेगुलर क्लास हियर. तो दैट आई विल डिस्कस. ठीक है ना? ओके. और वॉट एवर द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग ना, जस्ट राइट इट इन अ पेज ऑफ पेपर. पेज कहीं लिख लिया करो इन योर नोट्स. ठीक है, एंड दैट विल बी आंसर्ड लेटर. ठीक है, आप जो भी सवाल पूछते हो वो मेरे लेक्चर में पहले से होता है. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड आउटलुक, दैट इज Tagore's idea on education. What is Tagore's idea on education? This is the topic. We all know about R.N. Tagore. He was a universal personality. R.N. Tagore was a universal personality. Just I am discussing here some key points here. You must write this. Universal personality. Universal personality का मतलब होता है versatile genius. Universal personality means versatile genius. I have also told you previously that R.N. Tagore was polymath in real sense. R.N. Tagore was what? Polymath. R.N. Tagore was, in one sense, what? A kind of Renaissance man. R.N. Tagore, in Gandhi's ideas or approach, he was new man. He was a polymath. He was a Renaissance man. He was a new man. Okay. Multilinguist. Multilinguist. He knew many languages. Like Raja Ram Mohan Roy, he was also multilinguist. Got it? Now, okay. The next important point, in his, you can say, early career, or you can say that in his early life, he was very much influenced by the English poets. For example, when you read English literature, you must have heard the name of these poets like Wordsworth, Ruskin, and the playwright like Shakespeare.
Okay, so he was influenced by these personalities like Shakespeare, Wordsworth, Ruskin. Okay, important personalities. You can say Keats was there. Okay, Shelley was there. Okay, so is inspired by all these scholars. Okay, later he came to read all important cultural, you can say that, books from our cultural past, जो भी हमारी एंशियंट इंडियन थियोलॉजी है उसको भी उन्होंने पढ़ा. गॉट इट. कालिदास को भी पढ़ा उन्होंने, कबीर को भी पढ़ा, कालिदास को पढ़ा, कबीर को पढ़ा. गॉट इट. वैष्णवांस के बारे में जाना. ओके, यहाँ तक कि वो ब्रह्मोस ब्रह्म समाज ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे. आई ऑलरेडी डिस्कस देवेंद्रनाथ टैगोर, याद है ना, ब्रह्म समाज. ओके, so now we can say that he was a person who was well familiar with east and west. Okay, east and west का मतलब the glorious history of India, important literature. Okay, he was familiar with, and he was a great poet also. He was a great poet also. He was a great painter also. He was basically a person who advocated socio-religious reforms also. इसकी भी बात. He was a person who promoted this concept of Swadeshi also. स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट किया. गॉट इट. वी कैन सी. Was Rabindranath Tagore a politician like Gandhi? The answer is no. Rabindranath Tagore was not a politician like Gandhi. जैसे in French Revolution what we read, that in revolution the ideas of philosophers played an important role, but the philosophers did not participate directly. In the same way, Rabindranath Tagore is not an active political leader, but the intellectual ability of R.N. Tagore, we can say that the teachings of R.N. Tagore will be helpful in promoting unity in Indian society. It will be helpful in promoting peace and cooperation in Indian society. Okay, so is he promoting nationalism in one sense? If you are promoting unity among Indian people, if you are promoting peace and cooperation among Indian people, if you are promoting the idea of cultural synthesis, so this idea of cultural synthesis will promote unity and it will boost nationalism. So he was not an active political leader, but what he was doing, basically he has emerged as a medium, he has emerged as a vehicle for the promotion of nationalistic ideas, and he hailed from Bengal. So he was also, okay, the person, okay, who is given credit that this person has extended the literary renaissance of Bengal. It means his contribution are most important in the field of literature. So R.N. Tagore was the person who contributed in what? In Bengali literary movement. Who contributed in this Bengali literary movement. That is the most important thing. He wrote poetry, he wrote songs, and these poetry and songs were used during the Swadeshi movement. Okay, okay. Now this person who is so much progressive, who is Renaissance man, polymath, new man, obviously he will have most important ideas on education. His outlook on education is also very much important, because education is the basic pillar, okay, that will be helpful in the promotion of nationalism in India. So outlook of education is very much important. Okay. Now we are going to discuss the outlook of education. Okay. Now he desired for a education system, right? This education system should not be subjugated under colonial. ये बात वो साफ साफ कहते हैं. Education system should not be subjugated under colonial. It means education system must be free and independent from the colonial. Education system must be free and independent from the colonial rule. Why is saying this? Is context को समझो. Why is saying that education system must be free and independent from the colonial rule? इसके पीछे रीजन क्या है? The reason is that, देखो, colonial rule का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To subjugate everything, education, economy, and everything. So Indian education system, if there is colonial rule in India, and if British Indian rule, you can say that the company or the crown is making education policies in India. So by these education policies, they will try to ensure the economic interest of Britain.
And in this way, the Indians will never be independent thinkers. Their mind will be the slaves. That's why colonialism in British Indian rule, education system was one of the reflections of horror of education. वो ऐसी एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं बनाएंगे जिसमें आपके फ्री एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके. They will never design this education system. That's why Macaulay imposed what? English system of education. इससे आपकी क्यूरियोसिटी जो है ना, उसी को काउंटर कर दिया जाए. Got it? Many a times you will find that the people who are very good speakers in English, okay, they will find that some people are speaking good English, बढ़िया इंग्लिश कोई बोल रहा है, तो वो बेचारा प्रेशर में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, उसको लगता है यार मैं ज्यादा विद्वान नहीं. ऐसा नहीं. It's not about Hindi. It's about all regional languages. You should give respect to your regional languages. मेरी बात समझ गया ना? Yes, English is important. This shows that पूरे वर्ल्ड के साथ हम कदम ताल मिला के चल रहे हैं. इंडियंस को अमेरिकन और ब्रिटिश से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है. This should be a quality, but we should not underestimate, okay, our regional language. We should not disrespect our regional language. कभी नहीं करना चाहिए. और लोग करते भाई, इंग्लिश बोलने वाले तोते और कबूतर 20-20 हजार रुपए मार्केट मिल जाते हैं. मेरी बात समझ गया ना? कम्युनिकेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट. मेरी बात समझो. इंग्लिश बोल लेना बड़ी बात नहीं है. ठीक है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपने उन थॉट्स को किस तरह से शेप किया है, किस तरह से डिजाइन किया है. ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है, कि इंग्लिश बोलना, speaking English is not the scholarly task, and I'm not disrespecting English. I am saying that when you are writing in English, okay, when you are discussing your opinions English, so you should discuss the opinions, thoughts and ideas. आपका पूरा का पूरा focus केवल sentence formation में नहीं होना चाहिए. And this is the reason that UPSC does not need what? A very standard English. They need simple English where you could communicate your ideas. यहाँ पे इस चीज का खेल नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत शानदार वाली आती है, नहीं. पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अपनी बात को लिख दो, बस आपके बात में दम होना चाहिए. गॉट इट? ठीक है, दिस इज द आइडिया. दो योर आइडियाज शुड बी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई टैगोर सेड दैट I want a free and independent system of education, okay, in this colonial rule, because this free and independent education system will be able to promote the idea of freedom among the Indians. This will be able to promote the idea of freedom among the Indians. This will promote a kind of sense of cooperation. This will promote a kind of sense of cooperation among the Indian people. Got it? This is one of the most important things. Okay? Now, how it will happen? How we are going to develop a nationalist kind of education system? So Ambedkar said that, sorry, Tagore said that, okay, in this education system, one thing is very much important. And what is that? Generally, kya hota hai? Okay, in ancient India, we followed a style of education that was known as ashrama style of education. Ancient India se hum follow karte aa rahe hain. Ashrama style of ashram system of education. Got it? Now, he said that the concept of Shanti Niketan, ये भी क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स का, आया था ना. ठीक है, read this. Shanti Niketan gave birth to the idea of Shanti Niketan. He gave birth to this idea of Shanti Niketan. Shanti Niketan. Shanti Niketan, the literal meaning of this Shanti Niketan is abode of peace. This is Shanti Niketan. ठीक है, Shanti Niketan. Now, what is the basic idea behind this Shanti Niketan? That the teachers and the student, okay, both will, okay, be at the same place. Teachers and students both will be at the same place. Like in ashrama style, in ancient India जो होता था, that students क्या करते थे? Okay, away from the city life, शहर से दूर, okay, in forest aranya, they will go there. There are gurus or the teachers, okay, they will become disciples and the gurus will teach away from the, okay, you can say that the urban settlements of the cities. So शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट ही यही कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह जहाँ टीचर्स भी हो, जहाँ स्टूडेंट्स भी.
ठीक है, ये सिर्फ, यस प्लीज। Exactly, both are the same, used in the similar words, ठीक है ना? So this will be like a home for the teachers, for the students. This will be like a temple of education. ये temple of education होगा, जहाँ पे टीचर्स अपनी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही सीरियस अटेंशन के साथ निभा पाएंगे। टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन टैगोर इज फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ टीचर, ठीक है, कि जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। मेरी बात समझ गया ना? तो रोल ऑफ टीचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नाउ he says that, okay, we need, okay, a new system. And what should be that new system? A new system where subjects and the chapters are designed in a specific manner, and there should not be much requirement of the textbook. Textbook की ज्यादा requirement नहीं होनी चाहिए। Got it? Ideas should be discussed with the students. Discussions and discourse should be promoted with the students, ठीक है? And the main focus of the teacher should be on the transfer of knowledge. डाटा ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। आई फॉलो दिस मॉडल, टैगोर्स मॉडल। व्हेन आई टीच, कभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया क्या प्रिंटेड बुकलेट? कहीं नहीं किया, ठीक है, इन नो एनी इंस्टीट्यूट। ओके, सो द आइडिया शुड बी व्हाट? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। जो मैं पढ़ा रहा हूं इस बात को आप समझो, जो आइडिया मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं इस आइडिया को आप समझो। एंड वंस यू गेट दिस आइडिया, what will happen? You will be able to collect facts and informations and you can read it by yourself. Got it? So our focus should be developing thoughts, analyzing the topics on discourse, and remaining tasks will be done by the students themselves. You don't have to focus on that. But the process is reverse. Education system में उल्टा process है। टीचर का फोकस कहाँ हो? Okay. So what do we see? That the teachers focus are more on what? Fact, orientation of fact and information. और आप देखोगे कि जब आप उस मॉडल पे पढ़ रहे हो, राइट, दिस इज अ वेरी जनरल थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, बाय योर प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, दैट इफ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, तो उस समय आपको समझ में आएगा, लेकिन 2 घंटे के बाद कितना बचता है आउटपुट? फिर आप यू विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द स्लाइड्स, और ऐसे आप स्लाइड डाउनलोड करते रहो, 1 साल तक डाउनलोड करो, 2 साल तक डाउनलोड करो, ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम में आपने एग्जाम दिया, आपको पता होगा कि पूरे लर्निंग का जो क्रक्स होता है, यूपीएससी एक्सपेक्ट दैट द स्टूडेंट्स who राइट द क्रक्स ऑफ देयर नॉलेज और इंफॉर्मेशन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपने कहाँ से क्या पढ़ा है उसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? वो पूरा इंफॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का किसी काम का नहीं रह जाता। दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है ना? सो दैट शुड बी फोकस्ड एंड दैट इज द टीचिंग ऑफ टैगोर। ओके, दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, द इवेंट्स, क्लियर? The students must be familiar with this. The students must be familiar with the facts and information, but the facts and information should not be overburdened, because if you will overburden this education system with the facts and information, this will take away the creative ability of the student. This will suppress the natural potentiality of the student. आपकी क्रिएटिव एबिलिटी और नेचुरल पोटेंशियलिटी क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, और आप मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाओगे कि इतना कुछ मुझसे तैयार नहीं हो पाएगा। गॉट इट? टैगोर ने कहा कि जब स्टूडेंट को स्टोरी जानने की जरूरत है, एपिक्स को समझने की जरूरत है, तब हमने क्या किया? वी गेव द स्टूडेंट अ क्रॉनिकल ऑफ फैक्ट्स एंड डेट्स। हमने स्टूडेंट को क्या दे दिया? फैक्ट्स एंड डेट्स, ठीक है। जब बच्चे को ज्योग्राफी, जैसे आप बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो और बच्चा अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकल रहा है, कभी मिट्टी उसके पैर में लगा ही नहीं, और पढ़ रहा है वो ज्योग्राफी, ठीक है,
मेरी बात ध्यान से समझो। कभी रात में खुला आसमान उसने देखा ही नहीं और बुक में पढ़ रहा है सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन द स्काई, वो देख रहा है वो। क्या ऐसे नहीं होगा? आपने बच्चों से जमीन छीन ली, मिट्टी छीन ली और उनको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो। आपने इतिहास की कहानियां छीन ली और इतिहास में फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन बता रहे हो। ठीक है, का बच्चों को चलता फिरता मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो मशीन बनेगा तो कभी भी इस एजुकेशन सिस्टम का फायदा उसको नहीं हो पाएगा। दिस वर्ल्ड इज अ लिविंग वर्ल्ड एंड इन दिस लिविंग वर्ल्ड वी वांट लिविंग क्रिएचर्स। We want those people who can think, we want those people who can express their opinion, and for this reason the cultural streams are also very much important. So Shanti Niketan mein singing, dancing, painting, acting, in sab pe focus. He said that cultural education should be the part of our education system, that is a way of expression. This is how you are expressing your personality, and in this way the cultural abilities in the students, okay, can be explored in an effective manner. Got it? कल्चरल एबिलिटीज को हम क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड इफ यू विल डू दिस, automatically you will find that a sense of oneness will be promoted among the individuals. A kind of sense of nationalism will be promoted among the individuals. Got it? This is one of the most important points. And according to Ambedkar, we should learn from the West or not? We should learn from the political thoughts of West or not? Yes. Money also plays an important part in our life. We should be familiar with the ideas like idealism, सेक्युलरिज्म पता होना चाहिए, रेशनलिज्म हमें पता होना चाहिए, रेने देकार्ता की फिलॉसफी जो है वो पता होनी चाहिए, हमें जॉन लॉक, इमैनुअल कांट के बारे में जानना चाहिए, हाइडिगर के बारे में जानना चाहिए, ह्यूमनिज्म क्या है, इंपेरिसिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, रिलेटिविज्म क्या है, एथेइज्म क्या है. वी शुड नो ऑल दिस. सब पता होना चाहिए. बट बिसाइड्स दीज थिंग्स वी शुड ऑल्सो नो about the philosophy and history of India. We should be familiar with the science. We should know sociology. We should know psychology. We should know politics. We should know economics. Okay? So we should try to gain this information and knowledge. जहां से जो सीखने को मिल जाए वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए, and this will make our personality better. And this is the reason that Rabindranath Tagore was a exactly right. This is the most important. Okay? Polymath, यही तो रीजन है. He was a Renaissance man, and what he is expecting from the students, that the student should also be Renaissance man. The student should also be polymath. The student should also be encouraged to use reason. And in Gandhi's words, the student should be what? New man. उनको क्या बनने की जरूरत है? New man. Got it? So this is the most important teaching of Rabindranath Tagore. Can you write the points? अब आप लिख सकते हो. ठीक है. तो क्या टीचिंग रविन्द्रनाथ टैगोर की और गांधी की इज इट कंप्लीटली डिफरेंट? नो. मेनी पॉइंट्स आर कॉमन. बहुत सारे पॉइंट कॉमन है. रविन्द्रनाथ टैगोर टॉक्स अबाउट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स. यस और यस. तो आइडियाज क्या करना है, यूज कर लेना है. जो जहां पे कॉमन यूज होता है कर लो. ठीक है. क्रिएटिव एबिलिटी, यस. वोकेशनल कोर्सेज, यस. हिस्ट्री, यस. सेल्फ डिसिप्लिन, यस. डिसिप्लिन इन लाइफ, यस. दिस इज ऑल्सो प्रोमोटेड. क्रिएटिव एबिलिटीज, यस. दिस इज ऑल्सो प्रोमोटेड. ठीक है. पोएट्री हमें पता होनी चाहिए. सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, यस. दिस इज आल्सो देयर. शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस, concept of residential school is the expression of the same thing. Clear? Or colonial education is accepted or not? No, it's not accepted, because it will subjugate the mind of the Indian people. ये हमारे दिमाग को ही क्या कर लेगा, subjugate कर लेगा. Okay? For completeness we need what? Harmonious development of our personality. Tagore says that physical development भी जरूरी है, sports are needed, intellectual development is also very much important, intellectual makeup of mind of the individual, वो एजुकेशन से आएगा. मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नीडेड. ये बात तो गांधी ने भी कही थी. हारमोनियस डेवलपमेंट, जिससे हमारी पर्सनालिटी में कंप्लीटनेस आ सके, ये बात तो गांधी ने भी कही थी. हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंटरनेशनलिज्म. वी शुड नो अबाउट व्हाट? Western literature, Western progresses in science and technology. We should know about Western revolutions also. हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये भी पता होना चाहिए. वी शुड नो ऑल दिस. क्लियर? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया. ओके, दिस इज द टीचिंग ऑफ
Ambedkar. Is it clear? Universality is there. Okay. Nature-based learning is one of the most important focus area of teaching of Tagore. Nature-based learning. तो शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट क्या था? नेचर बेस्ड लर्निंग. गॉट इट? व्हाट अबाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहा? वर्नाक्युलर्स, यस. प्लस एजुकेशन, इंग्लिश सिस्टम ऑफ इंग्लिश, yes, we should also know English. If possible, we should know other languages as well. हमें इंग्लिश भी जानना चाहिए, दूसरे लैंग्वेजेस भी जानना चाहिए. गॉट इट? शांति निकेतन विश्व भारती. ठीक है. तो 1901, राइट दिस फैक्ट. दिस फैक्ट may be important for you. राइट. शांति निकेतन, शांति निकेतन, राइट. 22nd December 1901. Okay. 22nd December 1901, an educational institute was set up by Tagore. An educational institute was set up by Tagore. An educational institute was set up by Tagore. Okay. Educational institute was set up by Tagore. Right. Next point. It was based on the model of ashrama or gurukul of ancient India. It was based on the model of ashram or gurukul of ancient India. Ashram or gurukul of ancient India. Okay. Right. Next point. Located 150 kilometers away from Calcutta. Located 150 kilometers away from Calcutta. The name of place was Bolepur. 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 150 kilometers away from Calcutta. The name of this place was Bolepur. Clear? Right. This is Shanti Niketan. यही क्या है? Shanti Niketan. Shanti Niketan. Later it becomes, okay, 1951. Write this. In 1951. 1901 में ही क्या है? Shanti Niketan. Okay. Right. Next point. In 1951. Okay. Now, it was given or accorded the status of a central university, and this becomes Vishwa Bharati University. 1951. Okay. It was given or accorded, right, the status of a central university, and this becomes what? Vishwa Bharati University. Vishwa Bharati University. ठीक है. तो कैसे एजुकेशन सिस्टम में क्या ध्यान रहना चाहिए? तो रेजिडेंशियल एजुकेशन, यस. ओके. टूर्स हो गया, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज हो गया, और सबसे ज्यादा फोकस कहाँ है? डिस्कशन एंड डिबेट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. रोट लर्निंग is discarded by Tagore. Textbook over emphasis on the textbook is discarded by Tagore. इन्होंने कहा स्टूडेंट से, और मुझे तो ये आश्चर्य लगता है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, इसमें तो डिस्कशन को प्रमोट करना चाहिए. यू मस्ट प्रमोट व्हाट? डिस्कोर्स एंड डिस्कशन. देखो, फैक्ट्स पढ़ना, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने लगोगे, फैक्ट्स पढ़ना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क. आप बताओ कि जो एजुकेशन सिस्टम मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, अभी मैं वर्धा सिस्टम ऑफ एजुकेशन का हूँ, हार्टोक का हूँ, ठीक है, या सैडलर का हूँ, कोई फैक्ट आप भूल रहे हो? नहीं, आपको तुरंत याद आ जाएगा. क्वेश्चन पेपर देखोगे तो याद आ जाएगा. रीजन क्या है? हमने इस पे क्या किया? डिटेल डिस्कशन किया. सो ऑब्वियसली दिस मेथड, एक थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें. एक नॉर्मल मेंटालिटी ये है कि प्रोडक्ट इतने डे में डिलीवर हो जाना चाहिए. ठीक है. तो वैसे पढ़ोगे तो कैसे आप समझ पाओगे कॉन्सेप्ट्स को? कभी नहीं समझ पाओगे. द थिंग्स विल ऑलवेज रिमेन difficult. Now, one information for you. I have recorded one lecture in History Optional Paper 1, that is from Ancient Indian History. And when I was discussing that History Optional answers, so the main theme and the basic part of the main theme I have discussed in the question. Mapping वाला portion छोड़ के I have discussed 6 questions, I think. नहीं, 9 questions. ठीक है. In that video, आज मैं share कर दूंगा link. तो आप उन सारे वीडियोस को देखो. ऑप्शनल के वीडियोस हैं, बट द वर्ड हैज बीन यूज्ड, दैट इज वेस्टर्न क्षत्रपा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक पीरियड. वहाँ क्वेश्चन जो आए हैं, राइट, वैदिक पीरियड से क्वेश्चन है, वेस्टर्न क्षत्रपात से क्वेश्चन है. ऐसे जो भी थीम्स हैं, मैंने उनकी थीम की बेसिक चीजें डिस्कस करी. पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट है, और वो 2 पेयर तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था. ठीक है. तो उसमें एनसीईआरटी के कंटेंट को मैंने डिस्कस किया. ठीक है. उन वीडियोस को देखो और make notes of all the questions, and most probably you will get 1 or 2 question in 2025 prelims from the same video, क्योंकि यूपीएससी ऐसा कई बार करती है. मैंने
जीएस मेंस में भी देखा हिस्ट्री क्वेश्चन में, ऑप्शनल में भी देखा, दक्कन हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री, दे आर आस्किंग अ लॉट, ठीक है, थीम्स वहां पे दिए हुए हैं. So if you'll practice, this might be a chance that you can get one or two questions. For example, you don't know about Western Kshatrap. Western Kshatrap नहीं जानते हो कौन थे? So I have discussed that who were Western Kshatrap, which were important dynasties in Western Kshatrap. तो एक basic concept आपको पता हो जाएगा. Okay? So you must watch those videos and you will write the answer also. अपने notes में जितने मैंने model answer बनाए हैं, videos सुन के write the answer of all those questions. उसको भी आपको लिखना है and this is going to help you a lot in your examination. ठीक है, ये एक अलग पैटर्न होता है तैयारी का कि कंटेंट अपनी जगह है, सिलेबस अपनी जगह है, बट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के थीम को हम कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव आइडिया फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. सो विल डू दिस. क्लियर? नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट विल बी द रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लिखना है और वो क्या है, राइट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज राइट, डिस्कस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ, discuss the pros and cons of education system developed by British in India. Discuss the pros and cons of education system developed by British in India. 5 points, pros and cons. ठीक है, 5 pros 5 cons, ये आपको लिखना है. ठीक है ना, कि उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे और निगेटिव एस्पेक्ट क्या है. यू डोंट हैव टू राइट मच. ओके, मैक्सिमम 200 words you will write. What are the positive aspects of the education system and what is the negative aspect of the education system. ठीक है, you will write the answer and in next class, at the end of the class, in 10 minutes I will discuss the approaches also. ठीक है, any other question कोई है? तो revolts और rebellions करेंगे, that is a very important topic. Okay, then we will enter into RPS and Indian National Congress, उसके बाद आएगा. और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमारा शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट. और आप सबको पता है कि ये बैच में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास प्रोलॉन्ग्ड है, काफी लंबे समय तक जाने वाला है. इसका रीजन क्या है, ये बिल्कुल अलग फॉर्मेट पे पढ़ा रहा हूँ. द रीजन इज दैट रेगुलर क्लासेस में मैं ऐसा नहीं पढ़ा पाऊंगा. टीचर मैं ही रहूंगा बट मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा बिकॉज देर आर लिमिटेशंस ऑफ द क्लासेस. ठीक है ना, so since I am recording all these sessions, so I am discussing all in detail. Clear? Got it? So it will take time. National movement we will cover again in a holistic manner. और नेशनल मूवमेंट में आपको कहीं से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी. इवन द एनसीईआरटी बुक्स आर नॉट नीडेड. वहां पे एनसीईआरटी बुक्स की नीड भी खत्म होने वाली है. गॉट इट? चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. वेलकम. टुमारो is 2nd October. Yes, we have class. छुट्टी देनी है क्या, बताओ. If you want a holiday, if you tomorrow is 2nd October ना, so if you think that क्लास नहीं होना चाहिए तो मैसेज कर देना, कल की क्लास हम ऑफ कर लेंगे. ठीक है, मैं भी थोड़ी मूवी वगैरह देख लूंगा, मुझे ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना. ठीक है ना, तो यू विल डू टेक्स्ट. ठीक है, ओके 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 ओके, तो आई विल इन्फॉर्म. राइट, चलिए, थैंक्स टू ऑल.